हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम आज आर्या का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको जो पढ़ाया था फ्राइडे को, उसमें मैंने आपको बताया था काफ़ी कुछ, क्या होता है बटन, क्या कुछ नहीं। थोड़ा सा पीछे से हल्का सा एक दो सेंटेंस रिवाइज करते हैं और फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहले आप सुनिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं स्टेफनी के, और मतलब आर्या के, उन्हीं बहुत फेमस वो हैं, टेस्टर एंड डेवलपर हैं स्टेफनी, उन्हीं के पढ़ के। तो आप इसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और थोड़ा पीछे से रिवाइज करती हूँ, ठीक है। So to create a button, you use the HTML element called button dot, and let tick S say we have a close button dot. Now close buttons usually have an X, OK dot. Now, the issue with X is that even though X is pretty obvious for sighted users, screen reader users might not know what X stands for dot, and that tick S why we are going to use an area for this now dot. Let tick S test this button with our screen reader to see how it works dot. I tick M going. आपको बताया था क्लोज की जगह एक्स बटन कह रहा था, फिर आर्या यूज किया तो ओके कैंसिल क्लोज वगैरह, तो ये रिवाइज करवाया था मैंने आपको, सुनिए। I tick M going to fire up my screen reader now dot. OK, so I have focused my button now with my screen reader, NVDA dot, and now I tick M going to make the screen reader repeat back the button dot, button X dot, button X dot. OK dot. This is not descriptive at all. If you tick reusing a screen reader dot, if you tick recited, you can see that the X button is probably going to close something, but not for a screen reader dot. Now, let tick S make it accessible for a screen reader dot. मतलब X का मतलब क्लोज है, लेकिन स्क्रीन रीडर इस चीज को, स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए ये चीज अनाउंस नहीं होती, ठीक है। Now, let tick S make it accessible for a screen reader dot. First I tick M going to close off my NVDA using insert plus Q dot, exit NVDA dialog dot, left bracket chime right bracket OK dot, and now I tick M going to use area label dot. So, area attributes, they sometimes have the area prefix on them, or sometimes they don't tick D dot. So you can have role, which is also an area attribute dot. It just doesn't tick D have the area prefix dot. In this case, area label does have the area prefix dot, and as you can see, it is just a normal HTML attribute, so it tick as nothing special dot. So I tick M going to say area label, and I tick M going to say the value will be quote close window quote dot. So, let tick S pretend that this button actually page 3 closes a window dot. Now, let tick S fire up the screen reader again and see what it says dot. Button close window dot. Now, this is much better, isn't it question? We used area to make this interface more accessible dot, so that tick is really really good dot. Now, another thing you can also use area for is if you have a dynamic drop down, for example, those hamburger menus dot, you can use the area expanded to announce to the users when something has expanded or collapsed dot. क्या कह रहे हैं कि बटन में आप बटन टैग के साथ साथ उसके साथ ट्रू फॉल्स या जो भी कुछ ऊपर मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, पिछले ट्यूटोरियल में, वो सब यूज़ किया। तो आर्या का यूज़ हुआ, और अब फिर वो जाके क्या है कि वो अपना ओके कैंसिल क्लोज यूज़ कर रहा था। कह रहे हैं कि अब जिसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कुछ है, अगर कुछ अकॉर्डियन वगैरह है तो उसके लिए कॉलएप्स और एक्सपेंड फंक्शनलिटी का यूज़ कर सकते हैं, ये भी पढ़ाया था। अब इसके आगे से न्यू आएगा, देखो। So area is very much used building dynamic applications and dynamic UI dot, because when you have things moving onto the screen, if you tick यूज़र इंटरफेस और डायनेमिक एप्लीकेशंस होता है ना, उसके लिए कॉलएप्स एक्सपेंड के लिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। If you tick recited, it tick is very easy for you to see it dot, but if the user is using a screen reader and they have they tick read visually impaired or blind, then it tick is going to be much more difficult for them dot. Let tick is go to the WISE website where they tick we implemented a really good hamburger menu and see how they did it, how they used area for that dot. So I tick am going to have the screen reader. क्या मतलब हैमबर्गर में, हैमबर्गर HAMBURGER, हैमबर्गर मेन्यू और एक्सपेंड कलर्स फंक्शनलिटी कहाँ होती है, जैसे टैब पैनल और ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह में, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। So I tick M going to have the screen reader dot. I have focused the menu with my screen reader, and I tick M going to have it announce it now dot. Menu button collapsed, sub dash menu dot. OK dot. Notice how it says collapsed question. So I tick M going to expand the menu now using spacebar dot. Expanded sub dash menu dot. There we go dot. You can see. बटन के लिए क्या यूज हुआ था, बटन टैग के साथ प्रेस्ड, नॉट प्रेस्ड, या हाँ ट्रू फॉल्स के फंक्शनलिटी। इसी तरह इसके लिए एक्सपेंड कोलैप्स के लिए आर ये डैश ट्रू और फॉल्स की फंक्शनलिटी यूज़ होगी।
for true for expand, false for collapse. You can see that the menu is expanded, and since they used area, they did be able to announce that to screen readers. Left bracket chime right bracket now, let TKS look at the source code for this menu. And this is the button. And right now, if I collapse it, it has an area expanded false. When I expand it, Yes, yes. the area expand goes to true, and that forces the screen reader to say expanded or collapsed. And that TKS pretty much dash dash that TKS very straightforward when it comes to area. Page 4 of course, you should always use dash dash try to have as much semantic HTML as possible. But that doesn't dictate mean that every semantic HTML is accessible. So, only after testing, you should be able to figure out which area you need to use. So like I said, there are many different types of area. I think I'm going to show you an example of the landmark Arya. So if I tick I'm going to test my screen reader on this page, it only has div, so those divs have no semantic meaning. Header, main, footer, c, the screen reader announced header, main and footer as if they have no semantic meaning whatsoever. If I tried to jump through these dash dash, if I press insert plus F7, if I press on dash dash, if I open the elements list and I press on landmarks, I cannot jump to any of these because they are not semantically announced. This is how dash. अब न्यू ये है कि अगर हम लैंडमार्क सेक्शन पे जाना चाहें एलिमेंट लिस्ट के थ्रू, तो क्या हम डायरेक्ट पे जा सकते हैं लैंडमार्क के लिए डी प्रेस करके, या फिर एल एल से एल लैंडमार्क ढूंढ के नहीं जा सकते? तो हमने इधर आर जॉज से आता रीजन और डी लैंडमार्क, लेकिन हम क्या है उनके लिए अलग स्पेसिफिक अगर लैंडमार्क सेक्शन बनाएंगे आर्या के थ्रू, तो हम जब करके जा सकते हैं। ठीक है, सुनिए आप। This is how dash dash this is where we did we going to use the area roles dash dash landmarks dot. Let me silence my screen reader first रोल using इज इक्वल insert टू plus लैंडमार्क। s dot speech mode off dot okay dot. So I tick am going to use the area landmarks right now dot, and you do this by using the role attribute dot. Now you don't tick t have to use this for landmarks only, you can also use roles dot. You can also have role button, role link, role image, there are many of them, but this अब one is पढ़ाएं for आपको। landmark dot. So I tick am going to say role banner, which is रोल इज इक्वल टू लिंक इमेज हेडिंग्स डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर रोल विंडोज रोल विजिट रोल कंपोजिट विजिट रोल लैंडमार्क रोल में क्या है, रोल इज इक्वल टू बैनर फॉर हेडर, है ना, और सर्च फॉर फॉर्म लैंडमार्क, कंटेंट इन्फो फॉर फुटर, मेन के लिए साइट। ठीक है, इस तरह से रोल साइन होते हैं। so I tick am going to say role banner, which is the header dot. The main is going to have a role of main, and the footer is going to have a role of content info dot. Now let's tick s test the screen reader again dot. Main, landmark main dot. Content info, landmark footer, main landmark main dot. Banner, landmark header dot. See how much more in detail the screen reader goes. Question. Now, let me fire up the elements list dot. Speech mode off dot. I tick am going to press insert and F7 dot. There we go dot. Now, our landmarks can detect which is the banner, main, and content info, only because we used the correct area dot. Page 5 of course, it is not dash dash. If you tick recoding in HTML5, it is not necessary to use this dot. You can just use the footer element, the main element, and header element dot. So, like I said, whenever possible, try to use semantic HTML elements dot. However, just because these elements are semantic, doesn't dictate mean that they are going to be available to assist with technology dot. So always make sure that you test with screen readers dot. This is a big pitfall I see with using ARIS dot. A lot of people think that, I tick LL just use area, or I tick LL just use semantic HTML, then I don't tick T have to test my website dot. You always have to test your website with assistive technology dot. Area is also heavily featured in the WCAG dot. There is a specific success criterion called label in name dot, and this is used to help speech recognition software work together with area to recognize elements dot. So this one, success criterion 2.5.3 label in name, is specific for area labels dot. This success criterion also affects area labeled by attribute dot. So let me show you how we can make our website conform to this success criterion dot. क्या कह रहे हैं? 2.5.3 लेबलिंग नेम, यह वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन जो भी बनी है, अगर उनको इफेक्टिव बनाता है तो कौन बनाता है? आर्या। ये आर्या का कमाल है, जो एचटीएमएल जो सफिशिएंट है सिमेंटिक्स एचटीएमएल के, उसे और मोर इफेक्टिव बनाता है कौन? ये आर्या बनाता है, मोर एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 2.5.3 लेवल नेम क्या है कि ऐसा नेम होना चाहिए जो विजिबल भी हो
एक्सेसिबल भी हो, ठीक है। तो चलिए इसको ज़रा सुनिए ध्यान से। I tick am going to open up my brackets dot and let tick s called it link dot and let tick s say that this link dash dash let tick s give it a text of quote learn more dot quote now comma let tick s say that this is a blog post and we have area label comma and then we like तो कह रहे हैं कि आर्या लेबल का ज़रूर यूज़ होता है तभी वो एक्सेसिबल बनता है। लेबल्ड बाय आर्या डैश लेबल, आर्या डैश लेबल्ड बाय और आर्या डैश डिस्क्राइब बाय। तो अब ये क्या बता रही हैं कि जैसे डैश डैश लिंक बोल रहा है तो किसका लिंक है, एक प्रॉपर बोलना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, नेम एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, सुनिए। to say that the area label says comma quote pretty flowers dot quote now comma this is going to violate the success criterion label in name because the visible label is different from ठीक the है, area label dot and users using विजिबल लेबल speech इज recognition डिफरेंट। software they say quote click learn more dot quote the speech recognition software is not going to be able to find it because the visual label and the area label are different dot so that means that the visual label must persist inside the दोनों लेवल डिफरेंट है, विजुअल विजिबल अलग है, विजुअल लेवल, और जो जो आर्या जो मतलब जो एक्सेसिबिलिटी फाइंड कर रही है वो नेम अलग अनाउंस कर रहा है, जबकि दोनों एक ही होना चाहिए, तभी वो 2.5.3 को पास करेगा लेवल इन नेम्स। तो चलिए सुनिए। Page 5 persist inside the area label dot. Page 6 so comma. Let tick s fix that dot. To fix that comma, फिक्स just कैसे make sure करना that है? you add the visual label inside the area label dot. So comma. For example comma. Quote learn more about pretty flowers dot quote. In this way comma. You conform to the success criterion dot. So it is very important that you learn how to do it dot. And this is a mistake I see in many websites dot. The area label and visual label dash dash now comma. It doesn't tick t dash dash they don't tick t have to be 100% the same because if they are 100% the same comma, there will be no need to use the area label dot, but the visual label must persist inside the area label dot now comma. This is only for buttons comma, for links comma, for any element that needs an accessible name dot. You don't tick t have to add it into every single element dot now comma. I want to mention one other misconception people have about area is that it is only for low dash vision or it is only used for users with screen readers comma, which is not true dot. Area is used by speech recognition software comma, which is a software that allows you to operate a website by using your voice dot. So comma, like we said earlier comma, you can say quote learn more comma, click learn more comma, quote and the voice recognition software is going to click it dot. So this is dash dash the voice recognition software is used very much by sighted users dot. For example comma, if someone has severe tremors on their hands comma, they have Parkinson's disease comma, or they have recently broken their arms comma, which it makes it impossible for them to use a mouse to operate the site dot. Area is also very much used by other assistive technology such as braille terminals dot. They use screen readers dash dash the braille terminals do dash dash in order to activate the dots on the terminal dot, and any other assistive technology in the future that emerges that has access to area label comma, excuse me comma, that has access to area will be able to use it dot. So it is really very much misleading to say only blind dash dash that area is only useful for blind and low dash vision users dot. Not to mention that a lot of people who use screen readers comma, page 7 they are not blind or low dash vision dot. People with autism comma, people with migraines comma, that makes their heads hurt a lot when they look at screens comma, people with dyslexia comma, they also use screen readers comma, and they can be cited at the same time dot. So don't tick subscribe to the idea that area is only absolutely just for blind users dot. It has a wide range of application dot. So in this course comma, I tick am going to be going through a lot of these attributes dot, but since this course is for beginners comma, we tick we only going to be using and looking at the attributes that are most often used dot. We tick we not going to be looking at all of them comma, because that will be a really long course comma, that tick s for sure dot, and we tick we going to try to find out which ones we can use comma, which ones are popular comma, and what kind of support they have dot. Now comma, area was invented in 2014 dot, and it is not like valid with HTML4 dot, even though it works with HTML4 comma, just the validation software is not going to validate your site dot. But if you tick reusing HTML5 comma, it is absolutely covered by HTML5 dot, and I tick am going to also अभी explain एक्सप्लेन to you करूंगी some सब। things dot. For example comma, area controls is not supported by any screen reader except JAWS dot, and even with JAWS comma, it has very limited support dot. So I tend to just not use it dot, even though you tick VC a lot of examples they say comma, oh comma, area controls is like a very good attribute dot, like comma, if no assistive technology ever uses it comma, why spend time using it and developing it question?
So that tickets pretty much what area is dot. It is not a dash dash. If there are any takeaways I want you to take from here, comma, is that area is not a replacement for HTML dot. Area and HTML usually marry dot. They work together to create an accessible website dot. Area is not limited to HTML, comma, can also be used in SVG dot. Area is not just for blind and low vision users dot. It can be used by speech recognition software, comma, screen readers, comma, braille terminals, comma, or any other assistive technology in the future that comes up and can use area dot. And the other thing I want to say, page 8, is that always test your website dot, because even if you use 100% valid area, comma, if you made a mistake or if the assistive technology is not supporting it, comma, there is no point in just using area dot. That is pretty much what it is, comma, and we will dive further into the course dot embedded object. Blank, 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 blank. ठीक है। अब ये है कि आर्या फॉर व्हाट आर्या जस्ट फॉर ब्लाइंड यूजर्स ओनली, व्हाट what Arya is just for blind user only? No, हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए, डिसलेक्सिया है या फिर स्पीच डिसेबिलिटी है या फिर लो विजन है या ब्लाइंड है या दूसरे डिसेबिलिटीज़ में भी बड़ा यूज़फुल है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ये स्क्रीन रीडर किसी एक पर्टिकुलर पे काम करता है? नहीं, जो भी स्पीच मोड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें स्क्रीन रीडर आते ही आते हैं, स्पीच मोड पे बेस्ड होते हैं, वो सबके साथ या ब्रेल टर्मिनल्स के साथ सबके लिए वर्क करता है। फिर तीसरी बात ये आती है कि ये कब फाउंड हुआ? 2014 में HTML4 पे ये लॉन्च होना शुरू हुआ, लेकिन HTML4 से ज़्यादा ये इफेक्टिव और एक्सेसिबल वर्क करता है। वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं हम और टेस्टिंग कर सकते हैं आरिया के साथ। कब? विद HTML5, विद HTML वर्जन 5। HTML4 से ज़्यादा ये कंपेटेबल और बहुत ही मोर एक्सेसिबल और इफेक्टिव है HTML5 के लिए। तो आर्या के थ्रू हम बहुत ही एक्सेसिबल और बहुत ही मोस्ट ब्रांडेड और मतलब बहुत ही बहुत ही प्रीशियस वेबसाइट्स, वेब कंटेंट को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर स्पीच मोड सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बना है। जॉज शायद भले ही जॉस काम करता है, लेकिन जॉस के अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी आर्या को कवर करते हैं और आर्या के साथ बहुत एक्सेसिबल वेबसाइट्स का जो लेआउट है वो यूज़र को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये आई होप सो कि आज आपका कवर हो गया। नेक्स्ट कल हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैंने इतना कवर कर दिया। Unknown area dash programs window items new list area 1 row 2 area 3 what is y area row 3 area 1 row 2 area repository row area 1 row 2 area 3 what is y area row 3 column 111 of 56। ठीक है, तो वाई कुछ आर्य रोल्स पढ़ा है मैंने आपको, उनके बारे में और पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो बहुत ही अच्छा मैंने आपको से बताया है, डिस्क्राइब किया है। तो कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।